Assalamu alaikum Aziz Tulaba. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by Comsats Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. This is the third unit that we will be starting today. Before we go to our next unit, let's have a short summary of the previous lecture, which is called Nation-State System. इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट और डेफिनेशन किया नेशन स्टेट सिस्टम का एंड वी डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम. सो वी डिस्कस व्हाट इज अ नेशन स्टेट सिस्टम. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल living in a state and living in a territory, and those people have something in common, and then these people organized a government under a sovereign makes a nation state system. We also discussed what were the factors that helped in the development of nation state system, and these factors were industrial revolution, the growth of international law, rise of democracy, diplomacy, commercial and business activities. But the deepest impact that we discussed and we explained, जिसने नेशन स्टेट सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात मुरत्तब किए हैं, वो ये चार हैं जिनको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. सो इट वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म, मिलिट्री मूवमेंट्स, राइज ऑफ आइडियोलॉजी एंड एक्सटेंशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम टू नॉन यूरोपियन स्टेट्स. इसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम को डिस्कस किया, एंड इन दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड what are those elements that make a nation state system, that are very necessary for the foundation of a state. तो ये जो elements हैं जो कि एक nation state system को बनाते हैं, उसमें sovereignty है. sovereignty ना होगी तो state नहीं बनेगा, and sovereignty is the supreme power in a state. We also discussed the territorial integrity because people need some land to live. And third, we discussed the legal equality, that state systems can exist only if you assign, if you give equal status to all the countries, to all the members. So this would be then doing justice with all the international actors. And finally, we discussed nationalism, which is very responsible for a nation-state system. So this was all about the previous lecture. Let's come to our next unit, which is called national power. National power. Let's understand what is national power. So before I continue, in this chapter, we will study about these topics: definition and concept of power, concept of national power, characteristic of national power, elements of national power, the limitations of national power, and finally we would end up this unit. So let's start with power. What we mean by power. Before this, can I ask you a question, that do you like power? क्या आपको ताकत पसंद है? जी हाँ, नहीं बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, because no one would say that he or she doesn't like power. Most of us would say, yes, we like power. So, what kind of power? What a person struggle for to get a power? What kind of power a person likes? Because man as an individual struggle for power throughout his life. हम सारे जो हैं, जितने भी लोग हैं, इनफिराती तौर पे पावर हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं. ये पावर कैसी पावर हो, किस किस्म की पावर हो, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की पावर्स आ सकती हैं. आपको इमेजेस में कुछ पावर्स नज़र आ रही हैं. You may try for physical power, and for gaining physical power, you will do different types of exercise. You will go to gym, you will go to club, and you will try to get physical power, and you will take different kind of diets to take this physical power.
So this is one power, one kind of power for which you may try and you may struggle. People also like to have economic power, money power, and for this they work day and night. Throughout their life, they are in search of getting more and more money to get more power. And similarly, there is also an image in which you can see a power. What kind of power is shown here? Yes, it's spiritual power. People may try, if they don't like money power, if they don't like physical power, maybe they like spiritual power because they struggle for it and they do all efforts for it. They may go for different types of religious activities, मज़हब और उसकी तालीमात को फॉलो करेंगे और अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाएंगे, चाहे वो खुद बढ़ें, चाहे वो उस प्रैक्टिस की वजह से बढ़ें. But spiritual power is again one of the power that a person may like, she or he may not like, but it's a power which one can desire. So there are some of the powers mentioned. Physical power, you may go for social power to have a high status in society. You may have a moral power to control your emotions, to have a higher degree of moral values, and economic power and spiritual powers. So remember, we as a person tries for power. Then the next question is, what about the state? Will state also struggle for power? Do state also like power? Yes, because state is a collection of people. State is made up of a group of people. State has nation, or it may have a few nations, and these people being operating the states and working on the states may try for power. So yes, a state also struggle for power. State in a collective aspect tries for power because state is made up of peoples, and therefore because people like power, people struggle for power, state also struggle for power. Akhir, why the state struggle for power? Because it has to safeguard its territorial integrity. It has to safeguard its borders. It has to protect itself against threats from the outside. And similarly, the state has to fulfill the needs of its people. लोगों की जो facilities हैं वो भी तो provide करनी है, लोगों को उनकी हकूक देने हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना है. तो लिहाजा a state also struggle to get power so that it can serve its people, it can serve its nations, it can serve the different groups and meet their demands and give them facilities and also protect itself from outside aggression. So a state may try for different types of power again. It may go for economic power. पैसा ज़्यादा हो, जब फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो, जब ख़जाने में पैसा ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने कंट्री को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं. The second power is military power, which means that the state gets more weapons. It has a large standing army with good technology weapons, and therefore it will give them a good military power. A state always try to get a strong military power to protect itself. It may struggle for technological power, to get technology, the modern technology, and therefore make itself strong. It may strive for manpower, trained manpower. जो वहाँ की आबादी हो वो ट्रेन हो, वो स्किल्ड हो, उनको महारत हासिल हुआ. तो जब उनकी महारत होगी, जब वो स्किल्ड होंगे, जब वो ट्रेन होंगे, तो आपकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन बनाएंगी और इसी तरह क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बेहतर हो गया. So these are some of the powers for which a state is trying, a state is struggling. Now the question is, what is power then? But what is power?
मतलब है कि एक इंडिविजुअल भी चाहता है कि पावर हासिल करे, स्टेट भी चाहता है कि पावर हासिल करे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर हासिल करे। लेकिन सवाल ये है कि व्हाट इज पावर, एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन पावर हियर by a few words. I can use these words for power. For example, power is something impressive. It is something influential. Impressive है, मुतासिर कर देती है, influential है, इसका असर है, leading है, आपको आगे ले जाती है, dominating है, आपको गलबा दिलाती है, controlling है. Power is directing. Power is imposing. Power is inspiring. Power is stimulating. So I can use these words to understand what is power. Let's use some other terms. Power is also something expressive. Expressive ऐसी चीजें जो कि नजर आ रही हैं, तो पावर ऐसी भी एबिलिटी रखता है कि एक्सप्रेसिव है, नजर आ रही हैं, रिवीलिंग है, सब कुछ नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट है, नुमाया है, सेल्फ एविडेंट है, एलिमिनेटिंग है, रोशन है. So these are some of the words by which I can understand power. But still, how to define power? These may be some of the meanings which are linked with power. But what is actual power? How you will define power? Can you think yourself that what is power? You can stop here and think what may be power. Let's see and let's define power and matches how you have arrived at your definition. According to Morgenthau, I already explained Morgenthau is a very respectable political philosopher in the international relations. तो उसके मुताबिक power is the ability to influence the minds and action of man. ये वो सलाहियत है जिससे आप दूसरों के दिमाग को, दूसरों के जहन को, दूसरों की थिंकिंग को, उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उनको उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं. तो ये पावर है. सो पावर इज टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर्स, टू इन्फ्लुएंस दैम, उसके ऊपर असरअंदाज होना, तो ये पावर है. अगर आप औरों के जहन और उनके एक्शंस पे असरअंदाज नहीं हो रहे, वो अपना बिहेवियर कर रहे हैं, अपना अमल कर रहे हैं, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, दिस मीन्स यू आर नॉट पावरफुल. बिकॉज इफ यू आर पावरफुल, remember, you can change their behavior, you can change their action, you can change their mind. So this is how a power is. According to Orginsky, it's the ability to influence the behavior of others in accordance with one's own ends. Again, it's very closer to the definition of Morgenthau, the ability to influence the behavior of others. औरों के रवैयों को उसके ऊपर असरअंदाज होना, उसको मुतासिर करना, अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह आप चाहें उस तरह आप उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को मुतासिर करें, तो ये पावर है. सो रिमेंबर, it's again one of the good definition given by Orginsky. The next is the definition given by Schwarzenberger. According to this author, power is the capacity to impose one's will on others. Power is the capacity to impose one's will on others. अपनी मर्जी दूसरों पे मुसल्लत करना, और अगर वो आपकी मर्जी को ना माने, by reliance on effective sanctions in case of non-compliance, which means कि अपनी मर्जी औरों पे मुसल्लत करना, और अगर वो आपकी मर्जी को ना माने तो आपके पास ऐसे इख्तियारात मौजूद हों, ऐसे इफ़ेक्टिव सैंक्शंस मौजूद हों, ऐसे जवाज़ मौजूद हों, ऐसे मुअस्सर जवाज़ मौजूद हों जिससे आप उनको मजबूर कर सकें कि आपकी बात को मान ले. तो पावर वो जवाज़ हैं, वो आपके पास वो इख्तियारात हैं जिसको यूज़ करते हुए आप दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकें,
सो दैट्स अ पावर. जिस तरह आप ये समझ लें कि हम बड़े जब बच्चों को ड्राइव करते हैं, बच्चों की इस्लाह करते हैं, उनको बात करते हैं, वो हमारी बात मानते हैं. दिस मीन्स दैट यू आर पावरफुल बिकॉज द चाइल्ड इज एक्सेप्टिंग वट एवर यू आर सेइंग. जिस तरह आप चाहो वो इस तरह कर रहा है. लेकिन अगर बच्चा आपकी बात ना माने और वो अपनी मर्जी करे, दिस मीन्स समथिंग डिफरेंट. देन यू आर बेटर टू अंडरस्टैंड that how much power you have. Let's see. Now the next question is about national power. Earlier we discussed what is power. Now let's come to the question of national power. What do we mean by national power? Very simple. If you speak this word slowly, it's called national power, which means the power of a nation. Power of a nation, because national power. Or if it is the power of a nation, you can also say power of a state. एक रियासत की power, because a nation and a state can be interchangeable. So by national power, you may mean very simply, very briefly, it's the power of a nation. But because a nation lives in a state, so it's the power of a state. So that's a simple definition. Let's see how it is defined by others. A state always strives to increase its power. That's how it goes. ये हकीकत है. According to realists, a nation and a state always strive, always struggle to get power. Now the question is the power the mean or is the power the end? Before we define what is national power, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेट्स हैं जो कि पावर की हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, पावर को पसंद करते हैं, पावर को चाहते हैं, and a state struggle hard to get more power. So the question is the power the mean or is it the end? एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है. इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए हैं, मीन और एंड. इसका मतलब पहले क्या है? जब मैं कहूं कि इज द पावर द मीन, कि क्या पावर जरिया है, आपका अल्टीमेट टारगेट नहीं है, सिर्फ एक जरिया है कुछ और चीजों को हासिल करने के लिए. So this is what we mean by mean. काफी good terms आ रही हैं. This is what we mean by mean. कि by mean we mean that you are using it as a source to get other. और जब मैं कहूँ कि power is the end, which means कि power आपका end है, तो power आपका ultimate target है. आप power हासिल करना चाहते हैं, ये आपका एंड है. आप जिस रास्ते से पावर को हासिल करेंगे तो वो मीन बन जाएगा. तो क्वेश्चन ये है कि क्या पावर मीन है कि एंड है? एक स्टेट के लिए क्या पावर आखिरी टारगेट है कि नहीं? पावर उसके लिए वो जरिया है जिससे वो कुछ और हासिल करना चाहे. एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है. इसका आंसर ये है, power is the mean and power is also the end. According to most of the writers, power is the mean but power is also the end. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the state is trying for power because it is struggling for power. Why struggle for power? Because power can gets you many things. अगर एक स्टेट के पास पावर है तो उससे वो काफ़ी काम ले सकती है, उससे वो काफ़ी चीज़ें कर सकती है, अपनी आवाम को काफ़ी फैसिलिटीज़ दे सकती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है. तो पावर एक ज़रिया है, एक मीन है. स्टेट के पास होगा तो उसको यूज़ करते हुए वो काफ़ी मुख्तलिफ टारगेट्स अचीव कर सकता है. और इसी के साथ पावर आपका आखिरी टारगेट भी है. आई मीन स्टेट का आखिरी टारगेट पावर भी है.
इसलिए कि स्टेट चाहती है कि अपनी पावर को मजीद बढ़ाए, इसलिए ताकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बने। काफ़ी ज़बरदस्त सेंटेंस लिखा है आगे कि द स्टेट यूजेस पावर टू गेट मोर पावर। द स्टेट यूजेस पावर टू गेट मोर पावर, विच मीन्स दैट इट इज़ द मीन, आपका जरिया भी है, आपका आखिरी एंड भी है। आप पावर या एक स्टेट पावर इसलिए हासिल कर रहा है ताकि वो आखिर में ज़्यादा पावरफुल बन सके। तो मीन भी है एंड भी है। सो दिस इज हाउ अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पावर and the state. This concept is mostly supported by Machiavelli and Morgenthau, who are the realist and supporter of this kind of theory. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि power corrupts, power बिगाड़ देती है, and absolute power corrupts absolutely. और जब पावर की इंतहा हो गया तो वो आपकी बिगाड़ की भी इंतहा हो जाएगी, उसको ज़्यादा ख़राब कर देगी। खैर ये तो थी एक इंटरेस्टिंग बात। लेट्स कम टू नेशनल पावर अगेन एंड डिफाइन व्हाट इज़ नेशनल पावर। अकॉर्डिंग टू रोजिन एंड जोन्स, इट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंटरनेशनल एक्टर to use its tangible and intangible resources and assets in such a way as to influence the outcomes of events in the international system in the direction of improving its own satisfaction with the system. So Rosin and Jones के मुताबिक power is that ability of a country, it is that ability of a state by which it use its resources. एक ऐसी सलाहियत है एक स्टेट किया, एक एक्टर किया जो अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करता है, चाहे वो रिसोर्सेज टेंजिबल हों, वो रिसोर्सेज जो कि मटीरियलिस्टिक हैं, जो कि नज़र आ रही हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप इजीली देख सकते हो, एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज जिसको आप नहीं देख सकते। एक पावर की सोर्स तो है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको दोनों की, सो बाय टेंजिबल रिसोर्सेज आई वुड मीन मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फौजी साजो सामान, फौजी हथियार नज़र आते हैं तो ये टेंजिबल है। इसी तरह जो मुल्क में रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, न्यूक्लियर फ्यूल है, ये टेंजिबल रिसोर्सेज हैं, ये नज़र आते हैं। इनटेंजिबल जो नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह एजुकेशन है, एजुकेशन भी एक कंट्री को पावरफुल बनाती है, जिस तरह लीडरशिप है, जिस तरह गुड डिप्लोमेसी है। सो दीज आर द intangible resources. So power is that ability by which a state use its both resources, tangible and intangible, in such a way that it control the outcome. जो नताइज हैं उस पे इसको कंट्रोल हासिल है, नताइज को अपनी मर्जी के मुताबिक इख्तियार कर लेती है, नताइज को अपनी मर्जी के मुताबिक ले आती हैं अ स्टेट। सो दिस मीन्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर वेरी सिंपली इज व्हेन अ स्टेट achieves whatever it likes by using its tangible and intangible resources. अगर एक स्टेट ने ये कर लिया, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने टारगेट्स अचीव कर लिए जिस तरह वो चाहती है, by using both these kind of resources, it would be called national power. अगर उन्होंने अचीव नहीं किया, remember the national power is less and therefore the targets were not achieved according to their satisfaction. The next is the ability or potential of a state to influence the decision and behavior of other states in international affairs according to its own interest. बात तकरीबन वहीं आती है कि it's the ability of a state to influence the decision and behavior of others. औरों के behavior को, औरों के actions को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करना, दिस इज कॉल्ड नेशनल पावर। बट यहाँ पे आप किसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हो? इट शुड बी द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ स्टेट। सो व्हेन यू आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट, विच मीन्स दैट यू आर मेकिंग द स्टेट follow the policy that you want.
and you change the action of the states, this means that that state would be having more national power who is doing it, and the one who is accepting it and who is following the policy, so that would be called a weak national power. According to Hartman definition, national power denotes the ability of a nation to fulfill national goals. It tells us how much powerful or weaker a particular nation is in securing its national goals. Hartman के मुताबिक, again it is the ability of a nation to fulfill its national goals. एक nation अगर अपने अहदाफ हासिल करती है, जो उसने गोल्स मुतय्यन किए हैं, अगर अपने उसी गोल्स को वो हासिल कर लेती हैं तो पावरफुल है. अगर एक नेशन अपने मुतय्यन करदा गोल्स को हासिल नहीं करती है तो वो पावरफुल नहीं है. एंड सिमिलरली पेडलफोर्ड एंड लिंकन के मुताबिक, national power is that combination of power and capacity of a state which the state uses for fulfilling its national interests and goals. Remember, it's the combination of power and capacity, सलाहियत और ताकत का ऐसा इस्तेमाल जो कि एक स्टेट ऐसा यूज़ करे कि अपने कौमी मफाद, नेशनल इंटरेस्ट उसको हासिल कर लें या अपने मुतय्यन करदा गोल्स को हासिल कर लें. तो इस असना में दिस वुड बी कॉल्ड नेशनल पावर. मोर सिंपली अगर हम इसको ये कहें कि इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स, बाकी रियासतों के बिहेवियर को कंट्रोल करना. एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में, एक इंटरनेशनल सीन में अगर एक कंट्री, अगर एक स्टेट बाकी स्टेट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके और उनसे वो काम करवा सके जो वो मुल्क खुद चाहता है, सो दिस मीन्स दैट कंट्री वुड बी पावरफुल एंड द अदर कंट्रीज वुड नॉट बी पावरफुल, दे वुड बी वीकर स्टेट्स. अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जिस तरह अमेरिका आजकल कर रहा है कि वो जहाँ पे जो जाता है और जिस मुल्क में जैसी पॉलिसी चाहता है तो वो वहाँ पे अमूमन मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो कर लेता है और वो वहाँ पे कामयाब हो जाता है. अपनी मुख्तलिफ पावर्स को यूज़ करके वो बैनुल-अक़वामी दुनिया में मुख्तलिफ स्टेट्स में अपने इंटरेस्ट का दिफा करता है और अपनी मर्जी के मुताबिक वो वहाँ पे नताइज हासिल करने की कोशिश करता है. तो अमेरिका नेशनल पावर में ज़्यादा है, उसकी नेशनल पावर ज़्यादा है. द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस यूनिट इज़ characteristic of national power. What are the features of national power? Some of the features are: power is relative and not absolute. A state may be powerful than one state but may not be in comparison to other state. कि power relative है और absolute नहीं है, power मुतलक नहीं है, power हतमी नहीं है, ये इजाफी है, रिलेटिव है, ये चेंज होती हैं. रिमेंबर, कभी ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि एक स्टेट रिलेटिव मतलब रिलेटिव पावर नहीं रखता. सो पावर इज़ रिलेटिव, पावर इज़ नॉट एब्सोल्यूट. आप ये नहीं कह सकते कि एक स्टेट जो पावरफुल है तो वो बस सारों से पावरफुल है, ऐसा नहीं होता. एक स्टेट एक कंट्री से पावरफुल तो हो सकता है लेकिन वो स्टेट दूसरे कंट्री से पावरफुल नहीं भी हो सकता. दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव, कि पावर इज रिलेटिव, पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, पावर हतमी नहीं है. अगर आप कहें कि एक स्टेट के पास पावर है, जिस तरह एग्जांपल मैं ले लूँ इंडिया की, कि इंडिया मे बी पावरफुल देन नेपाल, it is a stronger country than Nepal because of this different resources. But India, is it India the full powerful state in the world? Is it the superpower in the world? So the answer is no. India is powerful than Nepal, but this doesn't mean India is powerful in the whole world. India is weaker than US or it is weaker than China. And this is basically the concept of relative and absolute. The second concept of power is that power is dynamic.
It is not static in IR. Remember, power चेंज होती रहती हैं. पावर इक्वेशन एक कंट्री की चेंज होती रहती हैं. एक कंट्री आज पावरफुल हो गया, वो कल पावरफुल नहीं भी हो सकती. पावर चेंज होती रहती हैं. आपको अगर तारीख याद हो, आप तारीख से एग्जांपल ले लें कि पहले रोमन एम्पायर एंड द रोमन एम्परर्स वर वेरी पावरफुल एंड दे वर कंट्रोलिंग अ वेरी लार्ज टेरिटरी. फिर उसके बाद मुस्लिम्स आए एंड द मुस्लिम्स कंकर a very large territory, and the Muslims also gave defeat to Roman emperor. और उसके बाद फिर एक ज़माना आया कि जब मुस्लिम्स वीक हुए, उसके बाद मंगोल्स आए, मंगोल्स ने गलबा हासिल किया. मंगोल्स के बाद उनका तनज़्ज़ुल आया, फिर वो ख़त्म हुए. उसके बाद ऑटोमन एम्पायर है, उसके बाद यूरोपियन पावर्स हैं, और यूरोपियन पावर्स भी और ऑटोमन एम्पायर भी उसके बाद ख़त्म हो गए, उनकी पावर्स कम हो गई. और आज यूएस एंड रशिया पावर बने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. उसके बाद रशिया की पावर ख़त्म हुई. आज दुनिया में अमेरिका है, उसकी पावर्स मानी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना की पावर भी बढ़ रही है. और थिंकर्स के मुताबिक वेरी सून इन द फ्यूचर चाइना मे क्रॉस द पावर ऑफ अमेरिका एंड बिकम द लीडिंग पावर इन द वर्ल्ड. सो यू कैन सी दैट द पावर इक्वेशन इज चेंजिंग. Power is dynamic, it is changing, it is continuous, and therefore आप ये नहीं कह सकते कि एक जो कंट्री पावरफुल है तो वो हमेशा के लिए पावरफुल होगी. पावर चेंज होती रहती हैं, और पावर के चेंज करने में काफ़ी अवामिल हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि कंट्री की पावर को चेंज कर सकती हैं. उनमें कुछ जो इवेंट्स हैं वो गिवन है जिसकी वजह से एक स्टेट अपनी पावर कम कर सकती है या ख़त्म हो सकती है. उसमें है अ रिवोल्यूशन. इनकलाब से भी एक स्टेट की पावर कम हो जाती है, क्योंकि इनकलाब से काफ़ी तबाही आती है, उसमें लोगों की जान का ज़िया होता है, उसमें अमलाक ख़त्म हो जाती हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस पर पैसा खर्च हो जाता है. सो एज द रिज़ल्ट अ कंट्री मे लूज इट्स पावर, अ स्टेट मे लूज इट्स नेशनल पावर बिकॉज ऑफ अ रिवोल्यूशन. सेकेंडली वॉर. रिमेंबर, जंग की तबाही बहुत ख़तरनाक है, बहुत होलनाक है. जिस तरह यूरोप की पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और कुछ की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और दे बिकम वेरी वीक स्टेट्स, एंड देयरफॉर ऑल द कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर यूरोपियन मास्टर्स. इट वॉज बिकॉज देयर वॉज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 and World War II. So remember, wars also decrease the national power of a state. And with this, if there are economic recessions, if there is a backwardness in the economic activities, जिस तरह loss of business है, business activities हैं, stock exchange crash हो जाता है, या unemployment वहाँ पे जाती है because of all these kind of economic recessions, banks अपनी property lose कर जाते हैं, banks loss में चले जाते हैं, currency कम हो जाती है, तो इसकी वजह से भी एक कंट्री अपनी पावर लूज कर सकती है. और इसी तरह एक्यूजेशन ऑफ वेपन्स एंड सक्सेसफुल आर्म्स एंड मिसाइल टेस्ट कैन आल्सो चेंज द वॉर इक्वेशन, द पावर इक्वेशन. अगर एक कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह बढ़ाए और ऐसे वेपन्स को बनाने में कामयाब हो जाए, तो उसकी वजह से भी उस कंट्री की पावर ज़्यादा हो जाती हैं. जिस तरह अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एक्वायर किया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इट फाइनली obtained nuclear weapon, and that weapon was used against Japan, and at once the power of Japan was destroyed, was damaged, and US was more powerful because of this successful test of nuclear weapons. So if there is a successful test of nuclear technology or missile technology, weapons, successful arms test, so this can again change the national power equation. It may increase the power, or it may also decrease the power if a country goes for disarmament. जब वो अपने हथियारों में कमी करे, तखफीफ करे, तो उससे भी पावर इक्वेशन चेंज हो सकती है. नेशनल पावर इज बोथ मीन्स एज वेल एज एन एंड. जैसे हमने पहले कहा कि नेशनल पावर मीन भी है, एंड भी है.
ये आपके डिफरेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक हसूल भी है, एक रास्ता भी है, और साथ में टारगेट भी हो सकता है कि नेशनल पावर एक कंट्री की इतनी ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा बढ़े कि वो कंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री नज़र आए। नेशनल इंटरेस्ट्स आर डिटरमिन्ड बाय नेशनल पावर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, जिसका मतलब ये है कि एक कंट्री की जो नेशनल इंटरेस्ट है, एक स्टेट का जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो उसका कौमी मफाद है, वो उसके पावर पे डिपेंड करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये कि अगर एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, उसकी नेशनल पावर ज़्यादा है, तो उसका नेशनल इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। वो हर जगह पे अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए दखल अंदाजी करेगा, इंटरफेयर करेगा, इसीलिए कि उसकी नेशनल पावर ज़्यादा है। अगर उस कंट्री की नेशनल पावर कम है, तो वो फिर अपने इंटरेस्ट को हर जगह प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो उसका जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो भी लिमिटेड होगा, वो भी कम होगा। लेकिन अगर पावर ज़्यादा है, नेशनल कैपेसिटी ज़्यादा है, नेशनल पावर ज़्यादा है, तो फिर उस कंट्री के, उस स्टेट के जो नेशनल इंटरेस्ट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, और वो फिर उसको अपनी उस पावर को यूज़ करते हुए प्रोटेक्ट भी करेगा और प्रमोट भी करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पावर की कंपोनेंट्स क्या हैं, पावर किससे बनता है, क्या ये खुद अकेला एक कंपोनेंट है या ये डिफरेंट कंपोनेंट से बना है। सो रिमेंबर, पहले नेशनल पावर वाज लिंक्ड विद मिलिट्री कैपेसिटी। पिछले वक्तों में नेशनल पावर से मुराद मिलिट्री पावर हुआ करती थी, फौजी कुव्वत हुआ करती थी। अगर फौजी कुव्वत ज़्यादा है, अगर फौजी ताकत ज़्यादा है, अगर आर्मी बड़ी है, उसके पास गुड वेपन्स हैं, उनके पास हथियार मौजूद हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास हर किस्म के मीन्स मौजूद हैं जंग लड़ने के लिए, तो ये माना जाता कि ये जो कंट्री है उसकी नेशनल पावर ज़्यादा है। लेकिन आजकल के ज़माने में ये महदूद नज़रिया काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल पावर। लेट अस स्टडी, let us learn how these elements are and what are these elements. So dear students, national power does not depend on a single component. Rather, it is complex. It has many components. What are the different components of national power? What are those parts which make national power? तो जो नेशनल पावर है वो कई एलिमेंट से मिल के बनती है, ये एक एलिमेंट पे मुनहसर नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स नेशनल पावर के लिए उसको बनाते हैं। अगर कहीं पे कंपोनेंट्स कम हैं या ज़्यादा हैं तो पावर भी कम ज़्यादा हो गया। सो रिमेंबर, दीज कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कोई कंपोनेंट स्ट्रांग होगा या किसी कंट्री में कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, उतना ही वो कंट्री स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा। आइए जानते हैं कि वो कंपोनेंट्स कौन से हैं जो कि नेशनल पावर को बनाते हैं। सो दीज कंपोनेंट्स आर, नंबर 1 पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लीडरशिप, diplomacy, ideology, military preparedness, and natural resources. These are the components that makes national power. तो ये components आपस में मिल के नेशनल पावर को ज़्यादा या कम करते हैं। अगर किसी कंट्री के पास इनमें ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी हैं तो नेशनल पावर ज़्यादा हो गया। अगर किसी कंट्री में ये कंपोनेंट्स कम हुए या उनकी क्वालिटी कम हुई तो वो कंट्री की नेशनल पावर दूसरे के मुकाबले में कम हो सकती है। लेट्स स्टडी दिस कंपोनेंट्स इन डिटेल नाउ। द फर्स्ट कंपोनेंट इज पॉपुलेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज पॉपुलेशन a strong component of national power? So yes,
population is a strong component of national power. आबादी नेशनल पावर को कम या ज़्यादा कर सकती है. अब क्वेश्चन ये है कि आबादी कैसी हो, क्या आबादी कम हो या किसी स्टेट की आबादी ज़्यादा हो, तो कौन सा फैक्टर पावर की तरफ ले जाएगा, कौन सा फैक्टर पावर को बढ़ाएगा, पॉपुलेशन कम हो या ज़्यादा हो. अब इसमें भी दो किस्म की बातें हो सकती हैं. वो बातें ये हो सकती हैं कि इट कैन बी बोथ. पॉपुलेशन कम हो तो भी स्ट्रॉन्ग है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो भी स्ट्रॉन्ग है. मतलब कम पॉपुलेशन भी बेहतर है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी बेहतर है. अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि कम पॉपुलेशन भी नुकसानदेह है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नुकसानदेह है, तो भी सही है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर ये कम ज़्यादा होने की कंडीशन क्या है, कब एक की कमी या ज़्यादती उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकती है. तो उसमें पहली बात यह है कि अगर पॉपुलेशन स्मॉल है, कम है, तो उस मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्क के ज़खायर तो नहीं बढ़ते, वो तो जो हैं वो मौजूद हैं. बट इफ़ द पॉपुलेशन इज स्मॉल, इट कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड एंड द फैसिलिटीज कैन बी इफेक्टिवली प्रोवाइडेड. एक गवर्नमेंट, एक स्टेट अपने लोगों की नीड्स को बेहतर तरीके से उनको प्रोवाइड कर सकती हैं, उनको मुहैया कर सकती हैं. और पॉपुलेशन चूँकि स्मॉल है, therefore they would be more educated, they would be given good opportunities to have good employment, and they can be disciplined, they would be very organized, and as a result the quality of the population would be very good. As a result the national power of the state would be more. लेकिन इसका एक नुकसान भी है. वो नुकसान ये है, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि वो जंग के ज़माने में, चूँकि आबादी कम है, इट कैन बी easily defeated because small population means small army, and therefore there is a small army that is fighting, and therefore it could not be defending itself. So there are positive, there are also negative aspect of having a small population. Let's come to large population. The large population can be a source of strength and it can also be a strength of weakness. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी सही नहीं है, अनएजुकेटेड है, उसमें एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है, लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो वो पॉपुलेशन अपने स्टेट पे एक बोझ है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर है, द पीपल आर एजुकेटेड, दे आर ट्रेन्ड, दे आर वेरी मच स्किल्ड, दे आर प्रोफेशनल, देन इट इज़ एन एसेट. ये पे एक असासा है, ये मुल्क के लिए बेहतर है और वो मुल्क काफ़ी मजबूत होगा. इसकी मिसाल में आपको यूएसए और चाइना का दूंगा कि दोनों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है. इवन चाइना की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उनकी बेहतर है. वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, वो ट्रेन है, उनमें स्किल्ड ज़्यादा है, दे आर वेरी प्रोफेशनल, एंड सेम एज कम्पेयर्ड सेम इन यूएसए एज वेल. एज अ रिजल्ट देयर लार्ज पॉपुलेशन is a source of power to them. So remember, if it is smaller, it should be again manageable, and it could be easily, also damaged in case of a war. But if it is a large population, the quality of population do matters. If good quality, it's a source of national power. If the quality is not good, they're uneducated and the resources are less, remember population is not an asset, then it is a damaged, it is इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, then population is a source of weakness. You can see images of populations and disciplined population, and if the population is large, unorganized, it can be a source of weakness as well. The second factor in the national power is technology. Remember, technology is very important. The question is, what is technology?
Technology is the use of science and the information of science, the application of science, and the machinery which are being developed by science. And this would improve the method of production. This would improve the products. So technology is the application of science information to get more of that information, and you have more good quality products. In technology, we see that in industrial revolution, which occurred in the West somewhere in the 17th century, so it made the European states very much powerful. यूरोपियन कंट्रीज में जो इनकलाब आया 17वीं सदी के ज़माने में, और दिस रिवोल्यूशन वाज अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ बनने शुरू हुए और लोग उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे. लोग गाँव से, देही इलाकों से शहरों की तरफ आए और उन्होंने जॉब्स की इन्हीं सनती इदारों में, और जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ी. सो दिस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, this industrial revolution made Europe very strong, and they were able to conquer and they were able to control many colonies in the world, and therefore they were successful in establishing their governments in different parts of the world. तो हमें नज़र आता है कि फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इसके साथ बेल्जियम वगैरह, पुर्तगाल, इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी के ज़ोर पे, इसी के इस्तेमाल से उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक अफ्रीका के और एशिया के बड़े आज़म पे उनको कंट्रोल किया और वहाँ पे अपनी हुकूमतें बनाई. इसी तरह US एंड SU, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड SU means Soviet Union. So both these countries became superpowers due to superiority in technology. They were powerful because they have superior technology. They have acquired good technology. Therefore, they became superpowers after World War II. And similarly, other countries in the Europe now and the Asian states, I mean the South Asian states, also are getting progress because of their advancement in technology. जिसमें मलेशिया आता है, जिसमें सिंगापुर है, जिसमें हांगकांग है. So they are progressing because of technology. Technology has three main areas that can account for national power. These areas are industrial technology, it could be military technology, and it could be communication technology. I'm repeating this again. There are three kinds of technology: industrial technology, military technology, communication technology. Let's understand what are these three technologies. You can see the image of industrial technology and the technology at present. Let's understand what is industrial technology. By industrial technology we means better tools and machinery. If a country progress in industrial technology, this means it is developing better machinery. There are better tools for production of equipments, and therefore the cost is less. The cost decreases because of industrial technology, and the people has to do less efforts because there are machines, there are industries, and these industries are working, and therefore the effort on the part of the human is decreasing. And similarly, the industries are working in a convenient method. The production is increasing, and better quality of product is being produced, which will make more income. You can see the example of USA and European states who advance in this kind of technology, and now they are very powerful. तो यूरोप और अमेरिका ने जो तरक्की की है आजकल के ज़माने में, वो उन्होंने सनती तरक्की की है, क्योंकि उनके पास जो सनतें बनी हैं, जो इंडस्ट्रीज़ बनी हैं,
उनकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर हुई है और ज़्यादा प्रोडक्शन से उन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाया है, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अपने कंट्री में लेके आए हैं, एंड देयरफॉर दे बिकम वेरी पावरफुल नेशंस. द सेकंड is military technology. By military we means that the weapons that are being used by the army, they are of good quality. They are better and sophisticated weapons. पेचीदा किस्म के हथियार, ऑटोमेटिक हथियार जो कि ज़्यादा ख़तरनाक हैं, they are more destructive. They provides then greater national security, and export of weapons are also even more productive. तो अगर किसी कंट्री के मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की है तो वो ज़्यादा हथियार बना सकता है, बेटर क्वालिटी हथियार बना सकता है, और इसी की वजह से वो अपने आप को भी सिक्योर करेगा, अपनी हदूद की हिफाजत भी करेगा, अपनी बाउंड्री की हिफाजत भी करेगा. तो इट विल बी अ स्ट्रॉन्गर कंट्री. और इसके अलावा वो इन्हीं हथियार को जब एक्सपोर्ट करेगा तो उनसे वो ज़्यादा ज़रिए मुबादला कमा के अपने आप को मज़ीद मजबूत करेगा. इसी के एग्जाम्पल्स में USA, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे चले गए हैं, एंड दे आर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस काइंड ऑफ वेपन्स, एंड दे आर आल्सो एक्सपोर्टिंग इट, एंड दिस इज आल्सो गिविंग देम मोर पावरफुल बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस नाउ. द थर्ड इज communication technology. The question is, what is communication technology? It is the technology that you used for communication, for flow of information between people. इसमें जो आते हैं उसमें transportation of goods आते हैं, improvement in the method of transportation of goods, people and ideas. कि लोगों की जो आमदोरफ्त है, आप उन ज़राए को अगर आप इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं, तो इससे भी नेशनल पावर बन सकती है. इसी के साथ मूवमेंट ऑफ पीपल, जिस तरह मूवमेंट ऑफ पीपल है कि दे को ट्रेवल बाय लैंड, दे को ट्रेवल बाय सी, दे को ट्रेवल बाय एयर. सो इफ you have to give them all these means of communication and they can move through all these means. And similarly, the flow of ideas also pass through these channels as well. So a country to have good communication technology, it should acquire network of roads. कि अपने इलाके में वो ज़्यादा रोड्स बनाएं, हाईवेज बना दें, मोटरवेज बना दें, जिससे तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गया, क्योंकि लोग जल्दी सफ़र कर पाएंगे और वो ईज़िली अपनी इक्विपमेंट्स को, अपने टूल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को बाकी मार्केट तक पहुंचा सकते हैं. इसी तरह गुड टेलीफोनिक सिस्टम बनाएं, आपको मोबाइल सिस्टम बनाएं, गुड एंड बेटर नेटवर्क्स बना दिया. इम्प्रूव्ड एयर ट्रैवल, जो हवाई सफ़र है उसको बेहतर बनाएं. सेफ सी रूट्स, जो समंदरी रास्ते हैं उनको महफूज बनाएं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर करें. इस तरह रेलवे ट्रैक्स बनाएं. ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स बना दें फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, वेब सर्विसेज वगैरह हैं. तो इससे भी एक कंट्री काफ़ी मजबूत हो गया. सो द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन दीज थ्री फील्ड्स, द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, द मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी would give a country more power. अजीज़ तुलबा, आज हमने नेशनल पावर के 2 कंपोनेंट्स कर लिए हैं. बाकी कंपोनेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. बिफोर फिनिशिंग, लेट्स हैव अ समरी ऑफ टुडेज लेक्चर. इन दिस कंपोनेंट, इन दिस यूनिट, वी डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ पावर. पहले हमने पावर को डिफाइन किया कि पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन to control the behavior of others in accordance with one's own will. जो बंदा खुद अपनी मर्जी करना चाहे और वो अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरों से काम ले सके, तो ये नेशनल पावर कहलाएगा. अब नेशनल पावर क्या है? नेशनल पावर एक स्टेट की पावर है और ये वो पावर है जिससे वो दूसरी रियासतों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके
और उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सके, उनके बिहेवियर को, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सके. सो इफ अ स्टेट कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स, if it can change the action of other states, if it can influence the other states according to the state own's will, so this means that state would be powerful. So national power of a state would be determined by how successful a state is having its own will imposed on others and make others do whatever the state likes. उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर डिस्कस किए और इसमें हमने ये डिस्कस किया कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं, वो अज्जा हैं जो कि नेशनल पावर को बनाते हैं. इसमें हमने आज पॉपुलेशन किया और टेक्नोलॉजी किया, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. पॉपुलेशन में हमने ये डिस्कस किया कि जो पॉपुलेशन है एक कंट्री किया, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उसके नेगेटिव भी हैं. पॉपुलेशन कम हो तो भी बेहतर है. अगर एक कंट्री के रिसोर्सेज कम हैं और उसकी आबादी कम है तो वो कंट्री अपनी पॉपुलेशन को बेहतर तरीके से उनकी फैसिलिटीज़ दे सकती है, उनकी एजुकेशन नीड्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट नीड्स, उनकी जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से वॉच कर सकती है. लेकिन इसका नुकसान ये है कि स्मॉल पॉपुलेशन कैन बी ईजिली डिफीटेड इन अ वॉर एंड देयरफॉर अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसका भी फ़ायदा है, उसका नुकसान भी है. अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी बेहतर नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन में एजुकेशन कम है, लिटरेसी रेट कम है, स्किल्ड मैन कम है, मैन पावर ट्रेन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन नुकसानदेह है, वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है. अगर यही पॉपुलेशन एजुकेटेड हो और काम करने वाली हो और ट्रेन हो तो ये पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है. इसकी एग्ज़ाम्पल चाइना के लिए है और यूएसए के लिए है, और इसी तरह बाकी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन चूँकि वो उसको यूज़ किए जा रहे हैं और वहाँ पे एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट हाई है, इसलिए हाई पॉपुलेशन उन कंट्रीज़ के लिए नुकसानदेह नहीं होता. इसी के साथ हमने जिक्र किया अबाउट टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर. बाय टेक्नोलॉजी वी मीन्स द एप्लीकेशन एंड द यूज ऑफ साइंस फॉर प्रोडक्शन. And in this we use three kind of technologies. One was industrial technology, the second was military technology, and the third was communication technology. In the military technology we discussed if the army and the quality of weapons are made good and they are good advancement in the military arms and equipments, so this is a source of security for that particular state, and the state can earn more income and they can also export those weapons and therefore will be a stronger country. In the communication technology, we discussed that the better means of traveling and the good use of land, sea and air and the email, the internets, the web services and the good roads, so this would be very productive for the country because it would help in the good traveling of the goods, the people and the ideas and would save time. And the third is the industrial technology, which means the advancement in the industrial products and the advancement in the industrial machinery. So better equipments, better products can be generated because of the advancement in industrial technology. So these are the summary of today's lecture. I hope you have understand the power and the concept of national power. Inshallah, I meet you in the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.